Hello everyone and welcome to Maths Tutor. Today we will discuss about matrix. That what is a matrix and how we use these matrix and that what operations we applied on this matrix and what is the general form of matrix कि हम matrix के बारे में उसका बेसिक्स पढ़ेंगे कि मैट्रिक्स व्हाट इज अ मैट्रिक्स मैट्रिक्स होता क्या है, उसको रिप्रेजेंट हम कैसे करते हैं, उसकी एंट्रीज क्या होती है, ऑर्डर क्या होते हैं. ऑल दिस थिंग्स टुडे वी विल स्टडी. दैट इज फर्स्ट मैट्रिक्स. दैट व्हाट इज अ मैट्रिक्स? It represents the numbers and functions in rows and columns in the form of matrix. What is a matrix? That matrix represent the number and the functions, any function or any number कि कोई भी हमारे जो मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट है, नंबर्स हैं या हमारे पास फंक्शंस हैं, दैट दिस मैट्रिक्स रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड इन द फॉर्म ऑफ कॉलम्स. की जो मैट्रिक्स है उनको रोज और कॉलम्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करती है. दैट इज अवर मैट्रिक्स. इन सिंगुलर फॉर्म, in singular form we use matrix, but in plural form we use matrices. That we are saying that let A be a matrix, that A singular one, that is we use matrix. And if we are saying that let A and B are our two matrices, A and B two matrices, two are there, it means that they are plural, that's why we use matrices. कि matrix word हम singular के लिए use करेंगे and matrices word हम plural के लिए use करेंगे. So take an example that how we write a matrix. First, that these brackets, we used these large bracket. Here we write the number 1 2 3 4. These are the elements of these matrix. और जो हमारी मैट्रिक्स है उसको हम लार्ज ब्रैकेट्स और समटाइम्स वी इनक्लोज द नंबर्स इन सर्कुलर ब्रैकेट्स. कि हम जो हमारी मैट्रिक्स के जो एंट्रीज होती हैं, एलिमेंट्स होते हैं, हम उनको या तो लार्ज ब्रैकेट और समटाइम्स वी इनक्लोज दैम इन अ सर्कुलर ब्रैकेट. कि हम सर्कुलर या लार्ज ब्रैकेट का यूज करते हैं किसके लिए? एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए. सो द नेक्स्ट इज द इंपॉर्टेंट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. कि जो हमारी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या होता है. हमने लिखा एक 2x3 की मैट्रिक्स है, एक 3x3 की मैट्रिक्स है, तो ये होती क्या है हमारी मैट्रिक्स. नेक्स्ट एंड कि रोज कौन से हैं हमारे पास और कॉलम कौन से हैं हमारे पास. So take a matrix that is 1 2 3 4 5 6. It is a matrix. So what are the rows here and what are the column here? The horizontal one is our rows. कि जो हमारी horizontal जो line होती है, that one is our rows. Like this is first. So it is our first row and we write it as R1. R1 means first row. And second is our second line is our 4 5 6 horizontal line. That one is our second row. So we write it as R2. So how many rows this matrix have? It is 2 rows. Now column, vertical line. कि जो हमारे पास vertical line है, that are our columns. So the first one is it is 1, so column 1, second C2 and third is C3. So this matrix is 2 rows and 3 columns. Columns are our vertical line and rows are our horizontal line. That horizontal lines are our rows and vertical lines are our columns. Next, so it means that rows of this matrix are 2 and columns of this matrix are 3. So how we write the order of a matrix?
order of a matrix, when we are writing the order of a matrix, then first we write the number of rows and then we write the number of columns. कि पहले जो हम rows लिखते हैं कि rows कितनी हैं, after that we are writing the columns. So it means R multiplies C. R represent for number of rows and C represent for number of columns. Or the general form of the order is M cross N. M is for rows and N for columns. So if we have to write the order of this matrix, so M cross N, M for rows, so how many rows? 2 rows, so 2, then multiply. Column, how many columns? 1, 2, 3, 3 column. So this matrix is of order 2 cross 3. कि ये जो हमारे पास matrix थी, its order is 2 cross 3. 2, it means that 2 rows it has and 3 columns it has. And the general form of the order of a matrix is M cross N. M for rows and N for our columns. So it is the general form of the for writing the order of a matrix. M cross N. M for rows and N for our columns. Next is our elements or entries. That what are the elements of a matrix and what are the entries of a matrix. कि जो हमारे पास matrix है उसकी entries कौन सी है, उसके elements कौन से हैं. Take an example. 5, 6, 7, 8. And the most necessary part after writing the matrix, that here we write the order of the matrix. So first count the rows. First row, second row, 2 rows, 2 cross. Now count the column. First column, second column, 2 column. So it is the matrix of 2 cross 2. Next, that what are the element and what are the entries of a matrix. कि जो elements हैं और entries कौन सी है. This 5, 6, 7, 8. All these are the elements or entries of this matrix. कि जो भी matrix के अंदर elements या functions लिखे होते हैं, number लिखे होते हैं, that are our the elements or the entries of that matrix. Then how we write or the general form of the element is that how we represent this Aij. 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 I for rows and J for column. How we write? So, if we are writing the element for first row and first column, कि हम जो एलिमेंट लिख रहे हैं वो हमारी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के लिए, देन इट मीन्स दैट I is 1 and J is also 1. I that is row first and J that is column first. So how we write? It is Aij. So write the value of I and J, it is A11. Next, that if I कि हमारी रो फर्स्ट है एंड हमारा कॉलम सेकंड है, देन हाउ वी राइट Aij? इट इज AI2 because our row it is first and our column it is second. So here it is the first row R1, it is our second row R2, it is our first column C1 and it is our second column, it is first column C1 and it is our second column that is C2. So 5 कि 5 हमारा कौन सा एलिमेंट है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. देन हाउ वी राइट? A एज द रिप्रेजेंटेशन कि हम इसको रिप्रेजेंट, एलिमेंट को रिप्रेजेंट के लिए हम A लिख रहे हैं. उसके बाद I और J. I हमें रो का नंबर लिखना है और J हमें कॉलम का. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सो इट इज A11. नेक्स्ट कम टू 6. इट इज फर्स्ट रो and second column, so it is A12. Next here 7, second column, sorry second row and our first column, so A21. Next
8, second row, second column. So A2, 2. So these are the representation, general representation of the elements कि first row first column है तो हम element को लिखेंगे A11, फिर first row second column है then we write A12. If the row is second and column is 1 then it is A21, and if both rows and columns are of second then we write A22. That we are writing like this. Now how we represent a matrix, naming of a matrix. Naming या how we denote a matrix. We always denote a matrix by a capital alphabet. कि जब भी हम मैट्रिक्स को कोई भी नाम देंगे, that if we are giving a name to the matrix then we use always the capital alphabet. Capital alphabet, that is A to Z. कि इनमें से हम कोई भी नाम दे सकते हैं. Like how we write that matrix is our A. A is equal to 1, 2, 3, 4. Here that our matrix is A and the elements of our this matrix is 1, 2, 3, 4, and the order of this 2 rows, 2 columns. That order of our matrix is 2 cross 2. That we always use the capital letter to represent or to denote the matrix, and we also always use the small a to represent the element of the matrix. कि हम हमेशा small a का यूज करेंगे elements को represent करने के लिए, और एक matrix के name को represent करने के लिए we always use the capital alphabet. Now if a expression is given then how we make a matrix, कि हमें एक expression given है तो हम उससे एक matrix कैसे form कर सकते हैं. So that is that let A be a matrix of order 2 cross 3 and Aij is equal to 2i plus j. Then form the matrix Our question is that let A be a matrix of order 2 cross 3 कि हमारे पास कोई भी एक मैट्रिक्स है and the order of that matrix is 2 cross 3. It means 2 rows and 3 columns, and the expression that is Aij is equal to 2i plus j, where we use Aij to represent our elements कि हम उसकी एंट्रीज एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए Aij का यूज करते हैं. हमें ये एक्सप्रेशन गिवन है and by using this expression we have to find the elements or entries of the matrix and then form the matrix. So that is how many rows? 2 rows. Then how we write matrix? 2 rows, it means R1 and R2. How many columns? 3 columns, C1, C2, C3. Then write the element. First row, first column, it is A11. First row, second column, A12. First row, third column, it is A13. Second row, first column, it is A21. Second row, second column, it is A22. Second row, third column, it is A23. Now we have to find these values of these elements. So our expression is Aij is equal to 2i plus j. So first we have to find A11. A11, it means that value of I is 1 and j is 1 कि जब हमें A11 एलिमेंट निकालना है तो रो भी हमारी फर्स्ट और कॉलम भी फर्स्ट. इट मीन्स दैट द वैल्यू ऑफ I is 1 and j is 1. So it is I1, so 2 multiply 1 plus 1. 2 into 1, 2 plus 1, our answer is
3. It is our first element. Next is A12, same as it is, that is 2 multiply 1 plus value of j, it is 2. 2 plus 2, it is 4. Next A13, it is 2 multiply 1 plus 3, it is 2 plus 3, our answer is 5. Now the number of the second rows, that is A21. How we find A21? That is value of I is 2. So 2 multiply 2 plus 1. 2 2s are 4 plus 1, it is 5. Next is A22. It means that the column is our second and row is also second. So value of j is also 2. So 2 multiply 2 plus 2. 4 plus 2, it is 6. Next is A23. Row second, column 3. 2 multiply 2 plus 3, it is 4 plus 3, our answer is 7. Now write the values here. It is our matrix A. A11, first element, it is 3. A12, second element, it is 4. A13, it is 5. A21, it is 5. A22, it is 6. And A23, it is 7. And at here, we write the order, that is 2 cross 3. Like this, we make a matrix if an expression is given to the elements. That if an expression of the elements is given, then like this we make the expression. Now we are writing the general form of a matrix. That how we write the general form? जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, कि हम एक मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म कैसे लिखेंगे. लेट A इज अ मैट्रिक्स एंड द जनरल, एट जनरल हाउ वी राइट दैट द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज m क्रॉस n, कि जो हमारी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर m क्रॉस n है. सो फ्रॉम हेयर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम A11, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम A12. फिर ith एलिमेंट आता है हमारे पास. हम जब भी एलिमेंट्स को लिखते हैं देन हाउ वी राइट Aij, इट मीन्स हमारे पास I एलिमेंट आता है. सो इट इज Ai jth एलिमेंट एंड एट लास्ट इट इज अवर विच रो, इट इज m रो, कि जो हमारे ये फर्स्ट रो थी और हमें कॉलम कहां तक जाना है, n तक. सो रो तो इधर सेम रहेगी, सिर्फ हमारे पास क्या चेंज होंगे, इधर हमारे पास कॉलम चेंज होंगे. सो एट लास्ट व्हाट इज हियर A1n, कि हमारे पास रो फर्स्ट है और कॉलम n आया है. नेक्स्ट हम लिखेंगे तो सेकेंड रो A21, A22, A2j एंड एट लास्ट A2n. सिमिलरली कि जो हमारी बिल्कुल लास्ट रो आई है दैट इज अवर mth रो. सो हाउ वी राइट, इट इज M column first, then mth row second column, then mth row jth column and at last AMN, कि जो हमारी रो है वो m है और कॉलम है वो हमारे पास n है. बीच में ith रो अगर हम लिखें तो हम इधर लिखेंगे AI1, AI2, AIJ and AIN. So this is the general form of a matrix, that it is our first row, कि यहां से हमारी R1 स्टार्ट हुआ है, इधर कॉलम 1 है, कॉलम 2, इधर हमारे पास जो कॉलम है वो jth है, इधर हमारे पास कॉलम है वो n है. R फर्स्ट है, R सेकेंड, here R ith and here R mth. First row first column, so A11, first row second column A12, first row jth column Aij, first row nth column Ain. Second row first column A21, second row second column A22, second row jth column A2j. Similarly, at last that mth row. So mth row first column it is AM1, m row second column sorry AM2, m row jth column AMJ, m row nth column AMN. And this is the order of the matrix, that is
m cross n. Like this, we write the general form of a matrix. So, we can make a matrix by the given expression. We can find the order of the matrix. If the matrix is given, then we can find the order of the matrix. In our next video, we will discuss about the types of the matrix, that how many types of the matrix and the operations, that how the matrix can be operated. Until then, if you like, then please share it, like it and subscribe it. Thank you.